Good morning, everyone. May I request all of you to ask your colleagues to join the session as soon as possible so that we can start it? Amit, son of Kia. Good morning, everyone.
It's equal. Wait, wait for a while. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. God. Hope everyone is joined. We are waiting for you all to join. We are waiting for all to join, so we'll be starting in another 5 minutes. Good morning, everyone. We are starting with this session with three themes of eat healthy, eat safe, and eat sustainable. Without taking much time, requesting Dr. Poonam session, the technical expert for the Center of Excellence in Advanced Research on Anemia Control under Haryana. She is a subject matter specialist and a regular speaker at various organizations such as ICBS, Midday Meal, Village Health Sanitation Nutrition Committee in Punjab and Chandigarh. She is also working actively to improve the livelihood of street vendors in Punjab and Chandigarh, prioritizing food safety concerns by training fleet of 80,000. Quality of FOSTA training with the team effort Chandigarh Millet Mission was first in North India in collaboration with WCD Ocean Project, which works for mothers' well-being and child growth monitoring through a smartphone application. She was also working on gene-based personalized nutrition via nudge clinical trial diabetes under for pre-diabetes. May I now request Dr. Poonam Khanna ma'am to please give the inaugural address and start the session. For wonderful introduction of mine. I requested you to mute the team to initiate this very important initiative of community health officers who are here with us to these technical sessions today we have with us. And I am highly thankful to Mission Director Sir Abhinav Sir for giving us this grand opportunity to initiate this and
are initiating this important endeavor from Mohali. I would also like to tell you that with the government and with PGIMER, we initiated a project in district Mohali as well, and now it is running very successful. And this e-treatment we call in when we are talking about health and wellness centers. So this is a big opportunity for all of us to grab, because when we what is the prevention of illness, it is very important for us to care of whether we are talking about the physical health, whether we are talking about the nutritional health, whether we are talking about the environmental health. So we are I will say, में सबसे आगे सिपाही चल रहे होते हैं. We are that, and they have a role to play because we want to save the nations. Without that, you all are lucky to have with us Ajay sir, Ajay Sharma sir. He is the today's event. He is qualified entomologist and associated with FSSAI, and he members, scientific member for the BAD 15 and 16, and he has been trainer with NABA, National Bee Board, and he had been member Shadow Committee on Pesticide Residue with FSSAI 2010 and 2014. And the interesting innovation with Sir is their team has developed ready-to-use therapeutic foods in collaboration with PGI MER, and the product is very successful and has been launched. So with these few words, I just, sir, would like to invite you just to give your good wishes so that we may start today's event. Good morning and thank you, Dr. Poolam. Was here today, and that's healthy. We need to have a right food mission by the PGNI and the state of Punjab, and as has been sort of all the best for this endeavor, and thank you very much. Thank you. Now we proceed to our next session. Our first session is about understanding answers and way forward to testing. We are now requested for the same. Thank you, Dr. Kristen. Please display my PowerPoint presentation. You all might be aware about why we are here today and what is the agenda behind. Because if we talk about the concept of food habits and health and wellness of mind, body, then it is very important that we should have some initiative. And to stay healthy is also, I will say, that is an achievable
a bigger challenge for us. Family welfare, they started with the Eat Right movement initiative, and they thought that it should be a mandate in our so that we would be able to prevent the illnesses and the problems that are non-communicable. Health and wellness centers, तो उसका basic is the continuum of important, जैसे मैंने बोला sustain करना जो है that is very important for all of us. Those points I will be using Hindi and English का combination. I hope you all are comfortable with that. And the first slide really adopt the approach, and after adopting this team-based network, they would be from upcoming health hazards to the nutrition, sanitation and hygiene, or other things, many other things are there. And the background of this lecture is that we want to have a better framework for with the connect of these food testing labs with the health and wellness centers. So what is need to have these food testing important area of concern? You all do many campaigns in your day-to-day life. You are focusing yourself on many proportional activities, going to celebrate those days, and you are making SOPs for all of that. But have you ever thought that although the Eat Right movement is an important component, what all activities health, sanitation and child nutrition committee जो है, that is their agencies जो है, they are there, but they are mainly focusing on the immunization component. And if you are just focusing on कि आपको पोलियो डे मनाना है, dengue के लिए you have to do something, and deworming day is there, all days are there, you all are celebrating it. कर दीजिए please, it like anything. But what is next slide? Today's context. Why we need to focus on कि हमें जो है अब health and wellness component में जो है वो कौन सा मैजिक बॉक्स है जो हमें सरकार ने दिया है और उसको हमें कैसे एक्सप्लोर करना है. प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस पर्पस का जो है, सो हेल्दी लिविंग बात कर रहे हैं. Then we need to connect the food we are eating. How much your population is aware about the food is safe. Make your population understand that the things that are coming from farm to fork are safer to them. And what facilities, what things you have in your health and wellness centers, so the food safety issues that are there with the products, चाहे वो cereal and cereal products हो, चाहे fat and oils हो, चाहे spices हो, चाहे fruits and vegetables हो, you would be able to make your population understand आप क्या कर रहे हो.
Is there anything? Do we have something in hand that will help us to resolve this issue? This we need some, food testing facilities in health and wellness centers. And before that, it is very important and how we may explore that. I'm not talking about what is available with us, because that content will be taken up by Dr. Rachna and Ravneet Madam. In need to focus that next slide, Dr. Kra, that we need these food testing making us understand that which food and health hazards in food that are associated, that are playing with the life of a community, like pesticide residues are there, chemicals are there, and the type जो आपके गांव में या जहाँ भी आसपास के लोग हैं वहाँ के लोग अगर किसी वेंडर से भी रहे हैं तो वो FSSAI रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, उनका लोगो, उनका लेबलिंग regulations के साथ या नहीं है, इस तरह की अवेयरनेस इज टोटली, मतलब आई विल नॉट टोटली, बट आई फील दैट 70% की लेबलिंग का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, फूड टेस्टिंग लैब्स का क्या है, लगा सकते हैं कि कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना हेल्दी पॉपुलेशन, हेल्दी कम्युनिटी एंड देन द healthy nations. So we have to ensure that there should be proper storage, transportation, packaging and distribution of food. पल्स की जगह प्लस करके आपका जो है वो टॉफी बिक रहा है, ऐसे ही मिनरल वाटर का जो ब्रांड है डिस्टिलरी की जगह कोई और ब्रांड जो है लोगों ने उसका भी कॉपी बनाया हुआ है, दैट यू नीड टू हैव, पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, देन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द पब्लिक कंज्यूमिंग. एंड अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें कि हम कैसे जो है, बिकॉज दिस इज कि आई एम सेइंग कि हमने ईट राइट मूवमेंट स्टार्ट करा दिया, हम लोगों को जो है टूल बॉक्स दे दिए, बट हाउ वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारा FSSAI जो है ये हमारा एक बैकबोन है फॉर providing us, making us, giving us. So we may organize, such campaigns, Eat Right, Eat Safe, and Fit India campaigns that will help in health promotional activities आपकी हो रही हैं, लेकिन everything like आप डेंगू को डेंगू स्पेसिफिक कर देते हैं, स्पेसिफिक हो जाता है, डीवर्मिंग डे हो जाता है, तो सेलिब्रेटेड फूड सेफ्टी डे कभी जून we celebrate, what we do, we have to mark these days that will help the community to understand this. Having a wonderful talk by adulteration of food. So ये अब healthy diets की तरफ, ट्रेडिशनल डाइट्स की तरफ मूव विदिन स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं. देयर इज ऑल्सो बेंचमार्क गिवन box which will be discussed later on, and the awareness on right there with us कैसे करें, उनको
एक छोटा सा फूड टेस्टिंग रिव्यू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में हो जानी चाहिए एंड इट्स स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल एंड वेलनेस प्रोग्राम पे हमें फोकस करना जो बच्चे हैं ना आज की डेट में पेरेंट्स जो है वो बच्चों की बात सुनते हैं सो बेस्ट प्लेसमेंट इज test these school health we have to make these school health and wellness investors and the mobile food testing lab should be there so that household visits urban area में हो जाए और maximum beneficiaries जो है they should be catched for that आप हर कम्युनिटी में जाके बता जो है चीजों को अरेंज करके रखना आप घर से मिर्ची और एनीथिंग यू वांट टू गेट एडल्ट्रेशन चेक फॉर दीज फूड बैन आई रिक्वेस्ट अवनीत मैम कि हमें थोड़ा सा आइडिया दे देना कि हमारे पंजाब में कहाँ कहाँ पे आई एम क्लियर अबाउट दैट वी हैव दैट बैन फैसिलिटी विद अस तो बाकी जगह पे कहाँ पे हैं वो भी हमें प्लीज थोड़ा सा बता दीजिएगा एंड वी मे ऑल्सो ऑर्गेनाइज वर्कशॉप आप साथ हैं डॉक्टर शंकर परिंदा का मैं नाम लेना भूल गई थी वी आर हाईली थैंकफुल टू सर दैट ही हैज प्लान टू टेक दिस इनिशिएटिव इन पंजाब बिकॉज in north side Punjab state will be the first one to this important component under health and wellness centers Chandigarh administration they are taking care of this component but other states they feel like that it is a part of FSSAI and they are not working on this to the ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है फर्स्ट जो पर्सनल है या जो ऑफिसेस होंगे वो थोड़ा दूर चले जाएंगे अगर हम थोड़ा सेंसिबल जो इस कंपोनेंट को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ ऑल ओवर जोड़ डालते हैं तो दैट वुड बी एबल टू रीच नंबर ऑफ कम्युनिटीज with the things for we are here for and the labs that provide us these testing facilities at doorstep about the Punjab and there is no cost activity as Punjab is having a very well established in all तो अगर आपको किसी भी सैंपल में रिपोर्ट होता है कि एडल्ट्रेशन का इशू है तो स्क्रीनिंग के बाद दैट सैंपल एंड द डिटेल्स ऑफ द सैंपल शुड रीच टू द मेन लैब फॉर फर्दर इंक्वायरीज एंड फर्दर क्लैरिफिकेशन अबाउट द कंसर्न प्रोडक्ट्स if we want to stay healthy if we want to sustain the health and if we want to build healthy nations तो हमें ये अपने साथ एक हेल्दी पॉलिसी के लिए जोड़ के चलना पड़ेगा और हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वाले जो हैं दे में कनेक्ट विद अस कि वो हम ये हेल्थ एंड वेलनेस है ये हमारे आप हमें बताइए कि हम फूड टेस्टिंग वाला कंपोनेंट है वो कैसे इसको हम फैसिलिटेट बना दीजिए कि हमें महीने में एक या दो एक्टिविटीज जो है वो करनी ही करनी है दैट आर फुली डेडिकेटेड टू ईट राइट ये हमने करनी ही है चाहे हम उसमें चाहे हम स्मॉल यू नो कॉम्पिटिशंस और समथिंग ऑर्गेनाइज करवा लें जैसे एम्बेसडर्स जो हैं एम्बेसडर्स आर
कम्युनिटी। तो ये छोटी छोटी चीजें humbly request everyone, मैं मानती हूँ हर किसी को, आप लोगों को भी बहुत सारे कंपोनेंट्स को फोकस करना पड़ता है। प्रायोरिटी टू दिस component to come up with the best results, and that will, if we are going to start this in a short notice, the ministry dashboard that Punjab ने हमारा ये करा will be all of you, and I like that जो हमारी मेहनत है that will be successful. So with this, I once again thank you all officials who are here, Dr. Krati and team, Dr. Rachna, British, and Dr. Savitesh. Parul is with us, and we are thankful, sir, for sparing your Thank you, ma'am, for providing us with the holistic view regarding this particular interactive topic and providing us a way forward to establish it and then further sustain it in forward. Ms. Ravni Kaur, Food and Administration, Punjab, lecture on the practical testing method. Thank you, Krati. Am I audible? Yes, you're audible, ma'am. First of all, a very good morning to all the participants, to all the dignitaries. My topic is testing methods. First of all, I would like to take you the Department of Food Safety, Food and Drug Administration. May I share my slides? Yes, ma'am. I'm not able to. Ma'am, you will have to share it at your hands. Appreciate it. The mission of our food safety department, which comes under public health, by ensuring the safety of our state's food supply and efficacy, as well as security of human and veterinary drugs. By our structure under Principal Secretary, Health and Family Welfare, we have Commissioner Food and Drugs Administration under legs. One is food safety, one is drugs control, and in between it is a state food and drugs lab. Coming to the food safety enforcement, 60 food safety officers and 22 designated In the state to look for the awareness and training of FBOs and consumers, licensing and registration of FBOs, then inspections, audits and hygiene ratings, e-track initiatives, and of course sampling. Then food and drugs testing lab at Kharad. We are equipped with high-end instruments, etc. We are an ABL integrated lab with the capacity to analyze 15,000 food samples annually. And Dr. Poonam has already explained about the food safety on wheels. That van which has a capacity to check
quality of food on more than 50 parameters. 50. I will explain the parameters in my later slides. Now, this is the scope and public health risk related to food kilos, contamination of foods, chemical contamination of foods, misuse of food additives, mislabeling, then last but not the least, food adulteration. The topic today we are discussing. Uh, can anyone explain what is adulteration? Anyone from the participants can explain what is adulteration? Ji, good afternoon. Myself, this course CHOHWC Salempur Kalam block. Ji. Food adulteration, ma'am, mixing of other particles like in दाल वगैरह ਦੇ ਵਿੱਚ mixing ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ adulteration ਕਹਿੰਦੇ food ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ extra quality ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ quantity maintain ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ quality ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ show ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ One of adulteration which is ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ materialistic gains ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ someone else ਹੋਰ Yes, ma'am. adulteration ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Ma'am, as my friend just told about the adulteration, this is the mixing of certain substances. I just want to add, this is also a subtraction of useful nutrients from the food to make them look good. Which people just extract the required nutrients of the diet. So adulteration is of two types. One is addition, another is a subtraction. Right. Both are form of adulteration. Either it's addition or subtraction. Yes. And some other adulteration could be of many types. It could be addition of certain harmful chemicals which just to as I just told to increase the shelf life, and it could be sometimes in certain foods. For example, if we talk about red chili powder or something, they just add certain chemicals just to maintain the food color, and some artificial colors and all that can be very dangerous for the gut, and that can cause I know about food adulteration. That's the any kind of mixing which is not good for health and which is harmful for the health. That is where you actually used to acquire, which we should actually use to consume. So any abnormal kind of food due to the mixing of some unwatched or criteria of proper nutrition. Now, as already explained by Mr. Sweet and Ms. Karam, added harmful materials just like brick material or any husk, anything to the that are dals and all. And secondly, they have a subtraction of any important ingredient. Third, they have explained use of colors in the add and mixing of artificial flavor of fruits and juices and in candy like in cakes. They pose a picture of a fruit, but it is actually not a fruit. It is only a sweetening agent. And
color is there. This is also a form of adulteration. Any other? Okay, now coming to the types of adulteration. Rabrita, are you there? Yes, I'm there. Actually, I've lost the connection. That's why. Now, if I come, what are the different adulteration that may be addition of any meter and then adding certain chemicals for preservation of food or faster with the ones, adding certain natural and chemical dyes to attract consumers, cheaper and inferior substances added wholly. These all are examples of the intentional adulteration. Now there also comes the incidental adulteration of pesticides, dropping of rodents, larvae in foods, etc. Then there is metallic contamination soil. It may be through air. That may also through the processing also. Just like if that vanaspati, while making vanaspati, nickel and copper are used as catalyst and contaminants. And other heavy metals include lead, arsenic, etc. And there's also one type of natural, some of the compounds which are naturally present in the substances, and if its amount is cyanic acid, etc. And one major area where of organic foods. Most of the time, organic foods, other foods sold as organic foods. Then adulteration is also overdosing of irradiations, then it is also a form of adulteration. Now, I have some examples of food products and their adulterant powder, ghee, cheese, butter, and with mashed potatoes, vanaspati, starch powder, etc. to make coffee, chicory, tamarind seeds powder, tea, then artificial coloring agents, sugar, chalk powder, washing soda. There are lots of many examples of all these adulterants which we found in food adulteration. This is my today's topic. Can anybody explain what are the topics? Am I audible to everyone? Then can anybody tell the methods of detection of food adulteration? How we can detect food adulteration?
I suppose you all are working at HWCs, Health and Wellness Centers. Yes, तो ma'am. आप लोगों के पास एक ई ट्राइड टूल किट आई हुई है सब HWCs में एक ट्राइड टूल किट आई हुई है am I right? We have a session on the same by Dr. Rachna. आपके पास है तो सही ना ये ट्राइड टूल किट Yes, ma'am. तो उसमें क्या क्या है ई ट्राइड टूल किट में क्या क्या चीजें हैं ई ट्राइड क्या है मे आई नो ई ट्राइड क्या है ओके to the detection of food adulteration अगर मतलब फ्लायर सॉर्ट ऑफ है जिसमें छोटे छोटे मेथड्स दिए हुए हैं फूड एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने की सॉल्ट है वो आयोडाइड नहीं है नॉर्मल सॉल्ट उसके लिए भी आपको मेथड दिया है कि एक पोटैटो को लेके देख लीजिए इफ इट टर्न्स ब्लैक तो वो आयोडाइज सॉल्ट है अगर नहीं है तो नहीं है मतलब अगर व्हाइट में ब्लैक नहीं होता तो वो आयोडाइज सॉल्ट नहीं है इट्स अ कॉमन उन्होंने उस फ्लायर दिया हुआ है कि प्योर मिल्क या आपने देखना है कि पानी तो नहीं है तो पानी देखने के लिए उसे जस्ट एक पेंटेड स्पेस के ऊपर करें ड्रॉप डाल के टिल्ट करें तो जो प्योर मिल्क होगा इट विल लीव मिल्क होगा वो अपना ट्रेल नहीं छोड़ेगा देयर आर सो मेनी सिंपल टेस्ट जिन्हें हम फिजिकल एंड सेंसरी मेथड्स कहते हैं डिटेक्ट करने के लिए जिनसे ये हम घर के छोटी कोई एग्जाम्पल और देना चाहेगा एनीवन कोई बताएगा कि हम हनी को कैसे देखते हैं कि एडल्ट्रेटेड है कि नहीं है फूड प्रोडक्ट खरीदने के टाइम हम क्या चेक करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदने के टाइम हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं फॉर हनी पर ग्लास वाटर लेंगे उसमें मतलब टेम्पर डाल देंगे अगर हनी नीचे बैठ जाता है सारा तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ चीज की मिलावट की गई है ना जी कोई तो नहीं है प्रॉपरली ऐसे जो हम सारे मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन हैं वो आपके पास जो बुक्स आई हैं उसमें सारा कुछ सेफ्टी मैजिक बॉक्स I'm sharing my screen. अगर आप लोग मेरे हाथ में देखें तो आई हैव अ बुकलेट ऑफ फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स मोर देन 100 पैरामीटर्स दिए हुए हैं टू टेस्ट द फूड एडल्ट्रेशन
These include a very small testing of milk and milk products, vegetables, fats, oils, and fat and feeding agents, grains and their products, fruits, vegetables, salt, spices, and condiments, and of course beverages. If anybody जो अगर इस बुक को या going to मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ कि उस लिंक्स में FSSAI की वेबसाइट है, FSSAI की वेबसाइट पे जाके you can do these sensory methods of testing. हम इनके बाद आए, these are physical and sensory methods. Then there are methods जो हमारे लैब में टेस्ट किए जाते हैं, जिनको that includes that in proximate analysis. Proximate में हम चेक करते हैं ash. इनको करने के लिए हम जो equipments use करते हैं that are normally oven, then fiber extractors, then muffle furnace, etc. And if we are going for the chemical and biochemical method, with a suitable solvent, clean up for removal of interfering matrix components, chromatography-based HPLCs and GCs, spectroscopy include FTIR, spectrophotometer, infrared spectroscopy, then atomic combined chromatography and spectroscopy methods include GCMSMS, LCMS serology, based and electrophoresis methods, and others include magnetic resonances. These are the various methods to detect the adulteration. First is we can go for based methods or the proximate analysis, and then the biochemical methods, then chromatographic separation is there, and through all these methods we can detect our adulteration. किसी का कोई क्वेश्चन हो? Anybody has question? Any question on this methods of testing adulterants in the food? Okay, then thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for comprehensively explaining the type of adulteration, method of adulteration, by giving various practical examples from the real life scenario. और जो बुक आपने अभी यहाँ पे डिस्कस करी उसका लिंक चैट कम्युनिटी यूज के लिए चैट आपके ये मैक्सिमम मैसेजेस कलेक्ट कर पाए और आगे कम्युनिटी को दे पाए. मैम, may I now request Dr. utilization of the magic box collaterals with eat-right handbook by ABHW teams in various activities. Thank you so much, Dr. Krati. Good afternoon, everyone. So, actually, this project we are going to discuss today is
joint baby of yes, we have a lot at place. We have awareness kit, we have information, we have people, we have community health officers. But how to integrate, how to connect, dispense the correct information to our community. So we look forward to how we can join all the channels what we have, and we can have motive and preventive health care. As we all know that we are top word in population, top in the world in NCDs, non-communicable diseases, and we are not a Russian. So yes, Eat Right movement, Eat Right India movement is has been rolled out on time. And yes, if we are projecting a healthy future, we need to be aware of all the, not just be limited to healthcare. The common consumer should have awareness about this. So my topic today is about Eat Right India initiative, and I am basically covering two most important tools, magic box. So food safety and standard 2006 actually ensures the availability of food for the people in India. Healthcare in National Health Policy 2017 is part of various flagship programs like Ayushman Bharat, Poshan Abhiyan, Swachh Bharat Mission, etc. FSSAI's food system in order to provide safe, healthy, and sustainable food through the Eat Right India movement. Uh, when we are talking about how it's to maximize the efficiency and achieve the scale, one is to engage, excite, and enable our consumers. Secondly, we forget to actually collaborate with our private partners. So private ecosystem is equally important in partnership with all whatever technology right now we are doing this session with the help of technology and yes, mass mobilization. So see the themes and sub-themes of Eat Right. We have three sections in Eat Right. All of this is governed by a very complex interplay of demand and supply between citizens and our food business operators. Mapping of food adulteration. Mrs. Ravi very efficiently covered all about it in her presentation. Then personal and we are talking about food safety. We have FSSAI training program in which we are training all the food handlers, and PGI is also one of the in-panel training partners with the FSSAI for training all the food business operators. Eat healthy, we are covering what to eat, what not to eat. Then we are telling people about creating awareness about balanced diet, fortified food, trans fat, high fat, sugar, and we all know our sources are limited, and this is high time that we should eat the city so that we could save resources for our future generations as well. So we must focus on no food waste, reduce plastic, and conserve water as well. Here I would also like to mention this year 2023 is the International Year of Crop. They are the crop
future. They are crop for solution to malnutrition as well as NCDs. So this also is being covered under Eat Sustainable mandate of Eat Right India movement. Going through how we can actually operate as so we have 6 strategies defined by FSSAI. First is robust and standards are already in place, but do we all know about it? During our session, we continuously try to include all of it's are there, but all of are we aware of all the standards? Yes, standards are there, but our practices are there, but are we aware about it? Then next is credible food testing and effective surveillance. Uh, we have food labs in Kharar. We have FSSAI labs in all the states. So we are also planning to put up that is the theme of today. We are also planning to put up this food testing thing in reach of a common man, a common person. Then effective surveillance, yes, our food safety officer pan India as well. The next priority is strengthening compliance enforcement and emergency. The Democrat, and yes, whenever there's a tender, we go and invoke with a bit of and preparedness for emergency response. Then strong culture of self compliance, as I already discussed that we have for those who are handling food in any way, even if they are manufacturing, they are serving, they are preparing, even if a person is a common street food vendor, we are training them for FOSTAC, and these they are being told about how they can follow whatever actually are 2 years, and they are supposed to retake their training after 2 years, and learning are actually helping them to become self-compliant as far as food safety standards are concerned. Then promoting healthy diets and sustainability, we elaborately discussed that FS Right Melas, currently we had Eat Right Millet Mela in Mohali as well. So we have doing all these things, and at we are creating awareness regarding healthy diets and sustainability, where they will ask the standards to be served to them, and this is how we can establish a sustainable, safe, and efficient food culture. Movement is very meticulously planned program. Actions are very different. There is a judicious mix of implementable projects and initiative. We have very defined objectives which we need to meet to ensure food safety. The strategy of Eat Right India is to the action plan encompasses a bouquet of initiatives to promote the demand or supply of safe and healthy food in a sustainable way. So how we are actually doing it? So there are certain intervention, or we are promoting self-compliance, and we are telling them about benchmarking and certification scheme used to demand safe and healthy food, and thus we are enabling healthy choices and addressing food. So first is this food stick box, and as Ma'am Ravneet discussed, so I'm aware that you all have this food safety magic boxes with you. So this food safety magic box is a packet in which we can do 102
evaluations actually. So it covers sensory evaluation, milk products, testing for them, fat, oils and fat, sweetening agents, sweet products, condiments and beverages. And it is not just confined to adulteration. We can actually test that if these products, what we are discussing. So these are certain uh, chemicals and equipments and other things which are available in this kit. As we have a limited time today, so I'm not going to go in detail what an iodine solution does or why the whole toolkit of this box, which is available. We can go through it, and in further trainings, we can actually basically, even if we don't have anything in our hand, we need to make people aware how they can actually assess if the quality of food product they are consuming is correct or I touching it. So labeling, packaging and storage information, storage hygiene, how the product has been kept in like whatever vendor you are buying it from, easily understand if the food is the correct quality. Next tool to ensure food safety and food sustainability, eat right, amazing box, a small one, eat right handbook. There are posters on different topics. Then there are certain activity tools as well. It has food pyramid, a food fortification pocket, how we can actually identify if a product is fortified or not. There is one plus F, that is the sign. Use it with our consumers in our school health program and for other people who are visiting to our wellness center to make them aware about it. Then hygiene activity card. If the surrounding hygiene is up to the mark or not. Again, activity card on personal hygiene, which is there. There also we can easily. It is the presentation ma'am was discussing. She was telling us about food adulteration testing method. There's food adulteration test, what we can do at home. Then there are CDs. There's a CD which contains video on different topics, like it covers nutrition during first 1,000 days. It covers then there are videos on balanced diet. There are videos on food fortification. There are videos on limiting the consumption of food high in fat, sugar, and food and safe food practices, what we should follow, and food adulteration information. So we have all the tools in place. How, like, why we are discussing health and wellness center, we can populate this information to grassroots level. Eat right and we are a supportive environment that increases the availability of healthful food for all. We want people to part, and we are advocating here policies to increase healthful diet and food supplies. So, how we can deliver whatever we have planned? We have ANMs, we have NPW, we have ushers. Then in school health program, we can utilize our Ayushman ambassadors. Then there's role of community health days. We can have annual health dialogues on different topics, whatever is concurrent.
Then we have JSMS and VHND days we celebrate outward. What are practices we should follow to in order to have healthy food uh, for disseminating the nation. So this is a safe framework. We were thinking FDA and PGIMR will join hands through ISC and train all our community health officers as well as medical officers, and we can do further hand holding, involve our other stakeholders, that is our RBSK and our school administration, so that schools could be centers for food one day in one school or in one sector. Like if there are 4 schools, we can ask the student to bring whatever food sample they think that they are not up to the quality or like that, and we can all these food samples, we can use food vans and we could deliver all these food samples to FDA labs for quality testing. So I hope I hope we are on correct track. We want to involve stakeholders so that we can come forward, we all could come forward and make sure that whatever people are eating from a plate or buying it, taking it from there is all safe, is all sustainable. Thank you so much. I would like to show you, I hope it is visible. There is this, I hope it is visible. और ये हम लोगों को एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसमें फूड एडल्ट्रेशन टेस्टिंग के लिए सिंपल मेथड्स जो है वो दिए हुए हैं. We have a Punjabi book as well. This has been developed in regional languages. We have this book who are visitors, those who are coming to wellness centers, और उनको आप सिंपली बता सकते हैं कि ये टेक्निक्स हैं जो घर पे वो फॉलो कर सकते हैं और बहुत आराम से पता लगा सकते हैं कि जो भी फूड स्पाइसेस या कुछ. इसके अलावा वी हैव दिस पिरामिड. This pyramid is actually telling us about how we should eat. The way, why this pyramid, we could have taken any other shape. It could have been a square or any other shape. Whatever is present in base should be eaten adequately. ये हमें ज़्यादा खाना चाहिए, और जैसे जैसे we are moving upwards, जो इनका इंटेक है उसका कंटेंट हमारी डाइट में हमारी कम होता जाना चाहिए. ऑन द टॉप कि ये हमें बहुत स्पाइसी खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए. शुगर और हाई फैट फूड का कंजम्पशन शुड बी वेरी लेस. और नेक्स्ट लेवल पे आप देख सकते हैं हाई प्रोटीन फूड की हम बात करें, फ्री सीरियल्स ऑल्सो. इसके अलावा वी हैव पोस्टर्स फॉर पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी हाइजीन. यू कैन सी फॉर पर्सनल हाइजीन बेबिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए, कोम्बिंग के लिए, हैंड वॉश के लिए. ऑन द बैक साइड ऑफ दिस देयर आर and this toolkit is actually if we can use this for creating awareness. This is in Punjabi as well. How to dispose of कैसे अलग अलग सेग्रीगेट करें ताकि सूखे कूड़े को हम वापस यूज कर सकें और गीले कूड़े को भी हम वापस यूज कर सकें कंपोस्टिंग वगैरह के लिए. सो ऑल ऑफ दिस इज देयर. इसके अलावा
अलावा we have posted limiting high fat, high sugar and high salt food. तो आज से थोड़ा कम इनिशिएटिव इज देयर। हम बता रहे हैं कि तेल भी कम, चीनी भी कम और नमक भी कम। तो इसके साथ हम एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन वी कैन टेल एज आई वाज डिस्कसिंग देयर इज वन हैंडबुक सही खाने के बारे में। तो ये भी हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्प्ले पर रख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो हम लिंक शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ कि वो उसको आराम से अपने फोन पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या सारी चीजें मेंशन है इस बुक में मेंशन है। Then we have this fortification poster. We all know that we have whatever universal programs we have on place mid day meal में, ICDS में और जो कहीं भी micronutrient rich. So we have fortification initiative in place. This is the logo of food fortification, or oil is there, flour is there, milk is there, which all is fortified, and we can encourage people to consume actually fortified foods to combat their micronutrient deficiencies. And then we have this fortification logo puzzle also, so that people will be able to identify if a product is fortified or not. So I guess we are good here. इसको यूज करेंगे लोगों में और awareness generate करने के लिए. So are there any queries? Over to you, Dr. Kriti. Thank you, ma'am, for explaining about the three things with practical examples. Since this method is a quick method और CHOs adopt कर सकते हैं इस method को, समझ सकते हैं स्लाइड से, हम स्लाइड्स भी शेयर करेंगे और कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत क्विक मेथड है, रेडी टू डू मेथड है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि इस टूल किट को कैसे लेकर जाना है, इसके अंदर क्या कोलेटरल्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। ये क्वेरी CHO से ऑफन आती थी कि हम इसे यूज कैसे करें। तो थैंक यू फॉर टीम को CPHC लेवल पे जिससे कि वो कम्युनिटी को इसके मैक्सिमम बेनिफिट देते हुए एक्सप्लेन कर सके, यूटिलाइज कर सके। May I now request Dr. Jagdeep from the state to give the way forward and closing remarks. Thank you, Dr. And Dr. Jit. I am Assistant Program Officer in Health and Wellness Center, Punjab. Great. Just a minute. Now visible.
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ 7 ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। Am I audible? Yes, Am I ma'am. audible? You're audible. Okay, thank you. ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਗਲੋ ਫੂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋ ਐਨਰਜੀ, ਗੋ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ, आपके पास थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा आप और अगर लाउड हो जाए। No, it's fine, ma'am. It's fine. It's fine. Thank you. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੋਸਚਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੇ? ਕੋਈ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੌਲਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੱਸ ਐਫ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਪਲੱਸ ਐਫ ਦਾ ਸਾਈਨ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਐਫ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ। ਬਾਕੀ ISI ਦਾ ਮਾਰਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਸਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਰਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈਜੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ 33 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਅੱਧੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ CD ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ, ਇਸ 'ਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਈਟ ਰਾਈਟ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੋਸਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ आज से थोड़ा कम। सो ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਔਰ
ਮਦਰ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਟ ਹੈਡ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ 1000 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਦੇ ਪੂਰੇ 1000 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਈਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਸਮਿਤੀ ਮੰਥਲੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾ ANM ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋਮ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਿਥਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਿਥਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੈਲਨੈਸ ਐਂਡ ਲੈਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਬੁੱਕ ਔਰ ਇਸ ਕਿਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨਸ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ TB ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਰੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ TB ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 2 days ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ TB ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਸੇ ਕਿਟ ਫੂਡ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇतना ज़्यादा तो ज़्यादा अटेंड कर सकते मतलब कमेटी में जाके चेक कर सकते हैं वो वैसे भी फीडबैक फॉर्म वगैरह भरते हैं सारे उन्होंने स्टेटस रजिस्टर जानते हैं उस भी जानते हो उस चाहिए एक बार चेक करके ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ज़्यादा तो ज़्यादा यूज़ करो अपने सेंड सेशंस लिए यूज़ करो तो अवेयरनेस क्रिएट करो सो इस लास्ट यही है कि सबको तुसी गाइड करो कि उन्होंने सेफ अडल्ट्रेशन वाली कीरिंग है तुसी वो भी यूज़ कर सकते हो फॉर सैंपल्स चेक करने लिए ते तुसी सारे और already try toolkit तो sensitize हो चुके हो toolkit ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ RBSK ਦੀ ਟੀਮਸ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਘਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ
आके तुहानू सैंपल दे सकते हैं फूड वैन्स के थ्रू the thing is main thing is ਤੁਸੀਂ ट्राई टूल किट यूज करनी है अपने सेंटर्स ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਲਈ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ I'm sharing my screen. Yes, we can end TB 2023 की थीम उससे रिलेट करते हुए एक्सप्लेन किया बाकी और किस जगह पे हम इंटरेक्ट टूल किट को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं क्या CHOs का पब्लिक आपने एक्सप्लेन किया थैंक यू सो मच एंड नाउ may I request this Ravneet Kaur to please give the vote of thanks and the closing remarks. Thank you, Prati. I would like to thank to the Principal Secretary, Health and Family Welfare, Secretary Abhinav sir, for giving us an opportunity to organize such an innovative event. To Dr. Shri and also Dr. Sangeeta, Dr. Gurman, Dr. Jagdeep from the Department of Health and Family Welfare. At the last, I would like to take an opportunity to thank all the participants who have actively participated in the to make our society, our state, eat right and stay fit society. Thank you. May I now request all of you to please अपनी वीडियो आप लोग ऑन करें जिससे कि हम एक ग्रुप ले सकें आज के सेशन को क्लोज करते हुए Done. Thank you so much. It's done and we'll be sharing the training material with you. इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो हमें आप शेयर करें.